Today we have to start with the scalar control of AC motor drives, and the most popular AC motor is the induction motor. Like I said that in 80 to 90% of the applications we use an induction motor. So we'll be studying first the scalar control of induction motor. And before going into the scalar control, we need to know about the basics of your induction motor. So we'll start with the construction of induction motor. So the induction motor, it has two parts. It has a stator and a rotor. Stator is the stationary part, rotor is the rotating part. तो stator में भी हमारे पास तीन parts होते हैं. One is the outermost part, that is called the frame. जो frame होता है, it holds the stator core, और जो stator core होता है, इसकी inner periphery पे there are slots, और इन slots में हमारी 3-phase stator windings होती हैं. Then comes our rotor. तो in the rotor part there is a shaft, and upon that shaft हमारा जो rotor core होता है that is mounted. तो ऐसे आपका shaft होगा, and इसके ऊपर फिर आपका ऐसे rotor core mounted होगा. और जो ये आपका rotor core होगा, इस पे बहुत सारे slots होंगे. तो rotor पे जो होते हैं slots, they are on the outer periphery. जो stator होता है, here the slots are on the inner periphery. तो अगर आप अपना stator देखोगे तो इस पे ऐसे जो slots होंगे, they will be on the inner periphery. और जो आपका rotor होगा, इस पे slots होंगे on the outer periphery. And फिर यहाँ पर आपकी windings होंगी here in these slots. So this is your stator, this is your rotor. तो जो rotor होता है, इसमें एक shaft होगी, shaft के ऊपर rotor core को mount किया जाता है. rotor में outer periphery में slots होते हैं, और इसमें हमारे rotor conductors को place किया जाता है. तो दिस इज इन केस ऑफ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर. जो हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है, हेयर जो आपके रोटर कंडक्टर होते हैं, दे आर कॉपर एल्यूमिनियम बार्स प्लेस्ड इन स्लॉट्स, शॉर्ट सर्किटेड बाय एंड रिंग्स. तो ये ऐसे आपकी एंड रिंग्स होती हैं. यहाँ ऐसे स्लॉट्स होंगे, एंड देन वी हैव दिस कॉपर बार्स. और ये जो आपके बार्स होते हैं, दे आर शॉर्ट सर्किटेड बाय एंड रिंग्स. इन जो स्ट्रक्चर होता है, दैट रिजेंबल्स है स्क्विरल केज. तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है, इसमें आपके रोटर कंडक्टर्स जो होते हैं, दे आर कॉपर एल्यूमिनियम बार्स, एंड दे आर प्लेस्ड इन स्लॉट्स and short circuited by end rings. So this is about the construction of a three-phase induction motor. And talking about the working of a induction motor, so when we give a three-phase supply, तो जब आप three-phase supply देते हो to the three-phase stator windings, how a rotating magnetic field is developed, वो मैं already last class में बता चुका हूँ. तो जैसे ही हम currents देंगे to these windings, तो जैसे ही आप थ्री फेज सप्लाई दोगे टू द थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी दैट रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड, एंड द सिंक्रोनस स्पीड इज गिवन बाय 120 f/p. अब ये जो रोटर कंडक्टर है, रोटर आपका अभी स्टेशनरी, और आपके पास एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है. तो यहाँ पर क्या है, आपके पास ऐसे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है. So here you have a rotating magnetic field. और rotating magnetic field में हमारा रोटर है. जैसा कि मैंने बोला था, जो आपका रोटर होता है, दिस इज शॉर्ट सर्किटेड. तो आपका एक कंडक्टर है जो कि
मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। सो रोटर कंडक्टर आपका स्टेशनरी है, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो रोटर में आपके ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें करंट्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज जो आपका रोटर है इट इज शॉर्ट सर्किटेड एट बोथ दी एंड्स। तो जैसे ही आपने स्टेटर पे सप्लाई दी, मैग्नेटिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस रोटर कंडक्टर को जैसे ही कट करेगी, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट्स फ्लो हो जाएंगी। अब ये जो रोटर कंडक्टर है ये क्या बन गया है, दिस इज ए कंडक्टर, ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक field. So obviously it will experience a force. So this rotor will experience a force and this rotor will start rotating. तो एज पर लेंजेस लॉ डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसी होगी कि ये अपनी ये एलिमिनेट करना चाहेगी द वेरिएशन, मतलब अपने जो कॉज को एलिमिनेट करना चाहेगी। सो इसका इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा, इट विल बी सच दैट इट विल ट्राई टू एलिमिनेट द वेरिएशन दैट कॉज्ड इट। और वेरिएशन क्या था, रिलेटिव। ये रिलेटिव मोशन जो थी आपका, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, इट वाज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, रोटर आपका स्टेशनरी था। तो ये चाहेगा कि ये जो स्पीड है, जो ये जो आपका रिलेटिव मोशन है, इसको ये कम कर सके। सो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो रोटर जो होता है आपका, इट ऑलवेज रन्स एट अ स्पीड स्लाइटली लेस देन दिस सिंक्रोनस स्पीड। तो रोटर जो है आपका ये एक ऐसी स्पीड पे रन करेगा दैट विल बी स्लाइटली लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, and there's a term called slip. Your percentage slip is given by the synchronous speed minus the rotor speed upon synchronous speed into 100. So this is your percentage slip. For a well-designed induction motor, the rated slip is 2 to 5%. This is for a well-designed induction motor. Next is the torque equation of an induction motor. So for the torque equation of an induction motor, we take the approximate equivalent circuit. I have taken the approximate equivalent circuit of an induction motor. So here is the stator resistance. This is the stator leakage reactance, stator rotor resistance, rotor leakage reactance. So from this equivalent circuit, we can get the torque equation of an induction motor. So if we see what is the current, तो अगर आपकी ये current आप देखोगे IR dash, this will be equal to the total voltage upon all of this. So your current IR dash, it will be equal to the applied voltage V upon RS plus RR dash upon S plus J times XS plus XR dash. तो ये आपकी रोटर करंट आपको मिल जाएगी। Now what will be the power transferred to the rotor? तो एयर गैप पावर जिसको बोलते हैं, तो एयर गैप पावर विल बी 3 टाइम्स IR dash square RR dash upon S. तो ये आपका आएगा एयर गैप पावर। एंड द रोटर कॉपर लॉस जो है हमारा, दैट विल बी 3 टाइम्स IR dash square into RR। ये आपकी रोटर की रेजिस्टेंस है। सो इसमें जो ड्रॉप होगा दैट इज योर रोटर कॉपर लॉस। एंड द मैकेनिकल पावर, द इलेक्ट्रिकल पावर दैट विल बी कन्वर्टेड, अब जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर, वो होगा आपका एयर गैप पावर माइनस दिस रोटर कॉपर लॉस। So air gap power is 3 times rotor current square upon rotor resistance upon slip minus 3 times IR dash square into RR. तो इतने पार्ट को कॉमन ले लो, सो वी विल गेट 1 minus S upon S. So what will be the torque developed by the motor? We know जो आपका पावर होता है that is torque into speed. So torque will be given by power upon speed. So जो torque develop होगा by motor, torque will be equal to the mechanical power upon जो आपकी रोटर की स्पीड है in radian per second. So जो आपकी रोटर की स्पीड है ओमेगा एम, दैट विल बी इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड इनटू 1 minus S,
where omega ms is your synchronous speed in radians per second and s is the slip. ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है. अब इसमें ये वैल्यूज पुट करो. दिस इज योर मैकेनिकल पावर अपॉन ओमेगा एम को रिप्लेस कर दो बाय synchronous speed into 1 minus s के साथ. 1 minus s will be cancelled, so we will be left with 3 times omega ms ir dash square into rr upon s. अब इसमें आप IR का वैल्यू डाल दो, जो हमने यहाँ ये IR का वैल्यू निकाला था, ये वैल्यू डाल दो. सो द टॉर्क दैट वी विल गेट, टॉर्क विल बी इक्वल टू 3 अपॉन ओमेगा ms. So this is your applied voltage upon stator resistance plus rotor resistance square plus stator leakage reactance plus rotor leakage reactance square into rr dash upon s. तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो टॉर्क होता है it depends upon the synchronous speed, it depends upon the applied voltage and it depends upon the rotor resistance. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, the only thing that can change is your slip. So जैसे आपकी रोटर की स्पीड चेंज होती है, आपकी स्लिप चेंज होती है, so differentiate this equation with respect to slip and equate it to 0. So इससे हमें क्या मिलेगा, we will get the slip at maximum torque. तो जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू स्लिप और इक्वेट कर रहे हो जीरो को, तो आपको क्या मिलेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू. सो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यू विल गेट the slip at which maximum torque occurs, and this is equal to plus minus the rotor resistance upon rs under root of rs square plus xs plus xr dash whole square. और maximum torque का आपको ये वैल्यू आ जाता है 3/2 omega ms v square upon rs plus minus under root of rs square plus xs plus xr dash square. तो यहाँ से अगर आप देखोगे, जो आपका maximum torque है, maximum torque depends upon one, it depends upon the voltage and it depends upon the upon xs and xr. rs जो होता है आपका स्टेटर रेजिस्टेंस, इट इज वेरी स्मॉल एंड वी कैन नेग्लेक्ट इट. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो मैक्सिमम टॉर्क है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस. मैक्सिमम टॉर्क जो होता है इंडक्शन मोटर पे, वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये किस स्लिप पे ऑकर होगा वो डिपेंड करता है अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस. सो मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन रोटर रेजिस्टेंस. देखो यहाँ पर आर वाली कोई वैल्यू नहीं है, बट जिस स्लिप पे ऑकर होगा दैट डिपेंड्स अपॉन रोटर रेजिस्टेंस. सो इफ यू नेग्लेक्ट दिस rs, तो आपके पास सिंपल अप्रोक्सीमेट इक्वेशंस मिलेंगी. सो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स, दिस इज इक्वल टू आर योर रेजिस्टेंस, rotor resistance upon xs plus xr dash, and the maximum torque is 3/2 times omega ms v square upon xs plus xr dash. So ये आपकी अप्रोक्सीमेट इक्वेशंस होती है. तो अगर हम सिंपली टॉर्क को देखेंगे, तो अगर आपको स्पीड चेंज करनी होती है, टू चेंज स्पीड वी हैव टू चेंज द टॉर्क. टू चेंज टॉर्क वी हैव टू चेंज द, you can either change the synchronous speed, or you can change the voltage, or you can change the rotor resistance. So next we will look at the various methods of speed control. So we have to look at the various methods by which we can control the speed of the induction motor. So scalar control में क्या होता है, scalar means magnitude. So if we see here, the term scalar, it means magnitude. So in scalar control, what we do is we change the magnitude of a parameter for control of, either you can change a parameter, you can change the magnitude of a parameter to control speed, torque, position, flux, it can be anything. जो आपका स्केलर कंट्रोल होता है, इट इज सिंपलर देन वेक्टर कंट्रोल. तो हमने देखा था हमारे पास एक स्केलर कंट्रोल होता है, हमारे पास वेक्टर कंट्रोल होता है. जो स्केलर कंट्रोल होता है, इट इज सिंपलर देन द वेक्टर कंट्रोल. लेकिन जो एक्यूरेसी होती है ऑफ स्केलर कंट्रोल, इट इज पुअर कंपेयर टू द वेक्टर कंट्रोल.
और जो ये स्केलर कंट्रोल है, इसके कुछ बहुत सारे आपके पास मेथड्स हैं कैसे यूजिंग दिस change in magnitude you can change the speed of a induction motor. So the first method is uh, how you can control the speed of an induction motor by changing the synchronous speed. तो जैसे मैंने अभी आपसे बोला था कि जो आपकी रोटर की स्पीड होती है इट इज स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। तो अगर आप सिंक्रोनस स्पीड चेंज करोगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड चेंज करोगे, तो क्योंकि आपका जो रोटर होता है वो फॉलो करता है सिंक्रोनस स्पीड को से थोड़ा सा कम होता है, तो जब सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी रोटर की भी स्पीड चेंज होगी। एंड वी नो सिंक्रोनस स्पीड इज गिवन बाय 120 f by p. So you can change the synchronous speed by number 1 frequency control or a frequency control. Change the frequency, the synchronous speed will change. And the second is by pole changing. If you change the number of poles, the synchronous speed will change, and accordingly the speed of rotor will also change. The second method is the stator voltage control. In the stator voltage control, if you see, अगर आप यहाँ से देख रहे हो, the torque that is directly proportional to the square of applied voltage. So if you decrease torque, अगर आप rated value पे काम करो and you decrease torque, sorry, if you decrease the voltage, हम क्या देख रहे हैं कि जो motor torque है that will also decrease. So if you can clearly see here, if you change the voltage, टॉर्क विल चेंज। आप इंक्रीज कर लो वोल्टेज को, टॉर्क चेंज हो जाएगा, टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। आप डिक्रीज कर दो अप्लाइड वोल्टेज को, स्टेटर वोल्टेज को, तो आपका जो टॉर्क है दैट विल डिक्रीज। द थिंग विद दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज देयर इज नॉट मच स्पीड रिडक्शन। वन मोर थिंग, जब आप वोल्टेज को कम कर रहे हो, टॉर्क आपका कम हो रहा है, लेकिन साथ में क्या होगा, आपका स्टार्टिंग टॉर्क विल ऑल्सो डिक्रीज। So this type of speed control, stator voltage control, usually we see this type of uh, control in fan type of loads. So in fan type of loads, what we do, we vary the voltage, and like if you decrease the voltage, your torque will reduce, and by that we control the speed. Next is the rotor resistance control. Rotor resistance control. So this is the value of your running torque. So for small values of S, for small values of slip, what we see is that torque is inversely proportional to the rotor resistance. Small values of slip का मतलब, अगर if your synchronous speed is 600 rpm, so your rotor speed it will be around 580 rpm, तो इस टाइम पे क्या होगा, स्लिप का वैल्यू कम होगा, बिकॉज स्लिप इज ns माइनस nr अपॉन ns। तो सिमिलरली अगर आपका ns is 600, स्टेशनरी है, जब आपका रोटर स्टेशनरी होता है, सो nr विल बी 0। तो इस टाइम पे अगर आप स्लिप कैलकुलेट करोगे, इट विल बी 600 माइनस 0 अपॉन
600, so this will be 1. So when your rotor is stationary, slip is equal to 1. और अगर आप यहाँ पर देखोगे 600 minus 580, that is 20 upon 600. तो इस टाइम पे slip का value will be low. हम running conditions की बात कर रहे हैं. So for small values of slip, आप क्या देखोगे, जो torque है that is inversely proportional to the resistance. आप resistance को बढ़ाओ तो आपका torque कम हो जाएगा. आप resistance को कम करोगे, your torque will increase. And if you see the starting torque, that is 3 upon, for starting torque your S will be equal to 1. So you'll be having V square into RR dash RS plus RR dash square plus XS plus. So this will be the value of starting torque. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, starting torque is directly proportional to the rotor resistance. So running torque is inversely proportional to the rotor resistance and the starting torque is directly proportional to the rotor resistance. और जो ये rotor resistance है, it can only be changed in a wound rotor induction motor. So if you want to go for rotor resistance control, you have to see that the rotor is, you have a wound rotor induction motor. And if you see the torque speed curve that we get, this is torque, this is speed. So torque speed curve will be something like this. This is your increasing rotor resistance. So as you increase the rotor resistance, the running torque decreases, and so if you can see that the speed is also decreasing. This should be slightly, this is the maximum torque, or maximum torque should be same. So if you see, maximum torque is constant with, if you change the resistance, maximum torque, because the maximum torque does not depend upon rotor resistance, but the running torque decreases, the running torque decreases by increasing the rotor resistance, or starting torque जो होगा, it will increase with the increase in rotor resistance. So every time you increase the resistance, the starting torque will increase. So this will be somewhat like this. This will be slightly more, this will be more than this. So you can make this correction. So your maximum torque, it does not depend upon the rotor resistance. Starting torque is directly proportional to rotor resistance, and the running torque, it is inversely proportional to the rotor resistance. Actually this is, ये आपका speed है, so this is correct. So आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, देखो maximum torque is remaining the same, लेकिन जैसे जैसे आप रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो, आपको देखो स्टार्टिंग टॉर्क जो है, स्टार्टिंग टॉर्क इज इंक्रीजिंग, एंड हियर इट इज स्टार्टिंग टॉर्क इज योर मैक्सिमम टॉर्क. और जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो रेजिस्टेंस को, तो रोटर रेजिस्टेंस को, तो आप देख रहे हो रनिंग टॉर्क आपका डिक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ रहा है, रनिंग टॉर्क डिक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम टॉर्क इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर रोटर रेजिस्टेंस.
The next control method, the scalar control method, is your frequency control. So we know synchronous speed is given by, so we'll discuss this in detail. Synchronous speed is 120 f by p. So when you change the frequency, आप frequency को change करते हो, तो already जो हम यहाँ पर देख रहे थे, the first method, so we had frequency control. So in frequency control, when you change the frequency, ns changes. And when ns changes, so by changing frequency, when you change frequency, the synchronous speed changes. And when synchronous speed changes, the speed of rotor also changes, because जो rotor होता है ये follow करता है synchronous speed को. तो अगर synchronous speed decrease हो जाएगी, तो rotor की भी speed आपकी decrease हो जाएगी. बट फ्रीक्वेंसी को हम चेंज ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप देखोगे जो फ्लक्स होता है फाई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स. तो अगर हम ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे ऑफ एन इंडक्शन मोटर, सो दैट इज 4.44 5 f एंड टर्न्स पर फेज. तो यहां से हम देख रहे हैं जो हमारा फ्लक्स है, it is inversely proportional to frequency. So if you increase frequency, suppose we increase frequency, so what will happen? Flux हमारा कम हो जाएगा. So we are changing frequency at constant voltage, but voltage is constant. So if you increase frequency at constant voltage, आप क्या देख रहे हो, जो flux है, flux will decrease. So जब आपका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से आप क्या देखोगे, जो मोटर टॉर्क होगा इट विल डिक्रीज. जब मोटर टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा, तो हम क्या देख रहे हैं, पावर हमारा डिक्रीज हो रहा है. जब पावर हमारे मोटर का डिक्रीज हो रहा है, यानी हमारा मोटर जो है, सो दिस थिंग इज डिरेटिंग द मोटर. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी मोटर की कैपेसिटी है वो कम हो रही है. इट इज रिड्यूसिंग द कैपेसिटी ऑफ आवर मोटर. नाउ द सेकेंड केस, अब आप क्या कर रहे हो, आपने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया. सो व्हेन यू आर डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एट कांस्टेंट वोल्टेज, फ्लक्स विल इंक्रीज. और जैसे ही आपका फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है, जो आपका कोर होता है, योर कोर गोज इनटू सैचुरेशन. So and this is not a good thing. You don't want your machine to work in the saturation zone. So frequency alone should not be changed. तो हम frequency को अकेले change नहीं करते हैं. So what we do, we go for variable voltage, variable frequency control. तो हम क्या करते हैं, if you see this equation, so यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो flux है, it will be, the flux is directly proportional to voltage and your flux is inversely proportional to flux. So we can see that the flux is directly proportional to voltage and inversely proportional to flux. So if we keep the V by F ratio constant, so what will happen? The flux will remain constant. So if V by F ratio is kept constant, the flux will remain constant.
This type of speed control is variable voltage, variable frequency control. You also call this as ट्रिपल वीएफ कंट्रोल. तो यहाँ पर आप क्या करते हो, बोथ आप वोल्टेज को भी चेंज करो, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करो, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रहता है. सो अगर आपका ये दिस इज फ्लक्स, आप क्या कर रहे हो, आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो और फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा रहे हो ताकि ये रेशियो आपका सेम रहे. तो देखो जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को भी जब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे उसकी वजह से भी हमने क्या देखा, जो उसकी वजह से आपकी स्पीड बढ़ जाती है. सो आप क्या करो, वोल्टेज को बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, तो इसकी वजह से आप क्या देखोगे, स्पीड विल इंक्रीज. बट जो आपका ये वी बाई एफ रेशियो है ये कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट. नाउ जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड दैट बिग प्रॉब्लम इज दैट फ्लक्स एंड टॉर्क दे आर कपल्ड. दे आर कपल्ड का मतलब ये दोनों वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं. तो अगर आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, आप देख, अगर आपको फ्लक्स चेंज करना है, आपने फ्लक्स के लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, तो आप देखते हो टॉर्क भी आपका चेंज होता है. और अगर आप जैसे आप वोल्टेज चेंज कर रहे हो, उससे आप टॉर्क को चेंज कर रहे हो, आपने देखा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज. हम यहाँ से देख रहे हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. तो अगर आप टॉर्क को चेंज कर रहे हो तो यहाँ से क्या देख रहे हो, आपका फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा फ्लक्स और टॉर्क जो है दैट इज कपल टू ईच अदर. और ये जो आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स रिस्पॉन्स थोड़ा स्लगिश होता है, ये बड़ा आराम आराम से चेंज होता है. टॉर्क रिस्पॉन्स इज स्लाइटली क्विकर. तो जब आपका फ्लक्स रिस्पॉन्स स्लगिश है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका टॉर्क रिस्पॉन्स स्लगिश हो जाता है और जो स्पीड कंट्रोल होता है वो आपका स्लगिश हो जाता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, स्पीड कंट्रोल है, इसमें क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, वी बाय एफ रेशियो को कांस्टेंट रख रहे हो, सो आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो रहा है. और जब आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो रहा है, सो हम वी आर एबल टू समवट डिकपल फ्लक्स एंड टॉर्क. अब क्योंकि फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो चुका है, you can change your torque without a change in flux. So here somewhat of a decoupling of flux and torque occurs. So here in triple wave control, when you change the speed, flux does not change. But कुछ problems भी हैं इसके साथ. So there are some drawbacks. So first drawback is that this we have to keep this v by f constant. ये जो ratio it should be constant, but achieving this ratio as like perfectly, this is not practically possible every time. तो कभी कभी आप क्या देखोगे, आप फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हो, आपको यहाँ से वोल्टेज भी कम करनी है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, वोल्टेज को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा. तो वहां पर कभी कभी कुछ ऐसे वैल्यूज आते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं. तो इस रेशियो को मेंटेन करना, इट इज नॉट परफेक्टली, मतलब इसको एक परफेक्ट आपको हर बार ही एक कांस्टेंट जैसा रेशियो मिलेगा, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सेकेंड थिंग, क्योंकि इसमें हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है, सो फ्लक्स कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल. आप सिर्फ टॉर्क चेंज कर रहे हो, फ्लक्स को आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो इसमें फ्लक्स कंट्रोल पॉसिबल नहीं होता है. और जब आप फ्लक्स कंट्रोल आप कर ही नहीं रहे हो, सो एफिशिएंसी विल नॉट बी ऑप्टिमाइज्ड.
So if you see the vector control में फ्लक्स को अलग से कंट्रोल किया जाता है, टॉर्क को अलग से कंट्रोल किया जाता है. So that is why it is a much efficient control. So थोड़ा if we go into more detail, so जो आपका ये V by F कंट्रोल है या ट्रिपल वी एफ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और वी कॉल इट V by F कंट्रोल. So यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं टू चेंज द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, and supply voltage is also changed accordingly so that your V by F ratio remains constant. So here supply frequency is changed to change the speed of induction motor. साथ में आप सप्लाई वोल्टेज को भी चेंज करते हो. बट वी कांट जस्ट चेंज दिस फ्रीक्वेंसी. अगर आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज की तो अकॉर्डिंगली आपको सप्लाई वोल्टेज को भी चेंज करना है सो दैट आपका V by F रेशियो जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट टू कीप V by F रेशियो कांस्टेंट अप टू रेटेड स्पीड. So here if you see the maximum torque, that will be K times V upon F square RS upon F plus minus. मैंने कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैक्सिमम टॉर्क में डिवाइड कर लिया है बाय फ्रीक्वेंसी. So this is your maximum torque because we are changing V by F. So इसलिए साथ में मैंने K रखा है. So this K is a constant. This is positive for motoring operation and negative for braking operations. तो अगर आप if you go for frequencies that are not low, हम वहां पर क्या देखेंगे, जो RS upon F at this is much smaller than 2 pi upon LS plus LR. So अगर हमारी ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये वाला पार्ट जो है ये इस पार्ट को डोमिनेट कर देगा एंड योर मैक्सिमम टॉर्क विल बी इक्वल टू K times V upon F square 2 pi upon LS plus LR dash. So अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे ऑफ, so if you see the characteristics of V by F control of induction motor drives, अब यहाँ पर देखो V, अगर आप मैक्सिमम टॉर्क देखोगे सो V अपॉन F ये कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, LS इज कांस्टेंट, LR डैश इज कांस्टेंट. तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है दैट इज कांस्टेंट. If you take a look at the characteristics, so we'll get characteristics like this. Almost parallel characteristics. This is your maximum torque. This is the maximum torque in negative direction. That means we are braking, and this is what happens when you increase frequency.
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एट 50% ऑफ वोल्टेज एंड एट 50% ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोटर जो है आपका इट विल रन एट रेटेड मैक्सिमम टॉर्क बट एट हाफ द स्पीड। आपकी स्पीड यहाँ पर हाफ हो जाएगी। And if we see, this is your voltage, this is your frequency. This is V rated, and this is the base frequency. So initially जो हमारी frequency है that will be zero. Initially rotor आपका रुका होगा, so your frequency is zero. Ns is equal to nr, that will be equal to zero. तो इनिशियली फ्रीक्वेंसी जीरो है, हमारी जो स्पीड है दैट इज जीरो, बट देयर इज सम वोल्टेज, कुछ वोल्टेज हमें अप्लाई करनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं बूस्ट स्टार्टिंग, एक बूस्ट वोल्टेज हमें देनी पड़ती है। ये वोल्टेज हमें क्यों इनिशियली देनी पड़ती है? टू एलिमिनेट और टू ओवरकम द स्टेटर रेजिस्टिव ड्रॉप। सो देयर इज सम रेजिस्टिव ड्रॉप इन द स्टेटर, सो टू ओवरकम दैट ड्रॉप हम क्या देते हैं, स्टार्ट में एक वोल्टेज देते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टार्टिंग इज कॉल्ड योर बूस्ट स्टार्टिंग। नाउ जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो, हम वोल्टेज को भी इंक्रीज कर रहे हैं, सो दैट द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। सो इफ यू सी हियर द रेशियो इज रिमेनिंग कांस्टेंट, बट वंस यू रीच द रेटेड वोल्टेज, अब आप रेटेड वोल्टेज के ऊपर तो जा नहीं सकते हो, बिकॉज उसके बाद क्या हो जाएगा, योर आपको इंसुलेशन प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो उसके बाद जो आप देखोगे, योर वोल्टेज, योर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग बट योर वोल्टेज जो है दैट इज विल बी कांस्टेंट। सो हम क्या करते हैं, वी ट्राई दैट वी शुड ऑपरेट इन दिस रीजन ओनली। हम इस वाले रीजन में ही सिर्फ काम करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड योर फ्लक्स कंट्रोल रीजन। दिस हियर इज योर फ्लक्स कंट्रोल रीजन। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे हमारी वोल्टेज भी इंक्रीज हो रही है, और जो हमारा V by F रेशियो है इट इज कांस्टेंट इन दिस रीजन। बट वंस यू रीच द रेटेड वोल्टेज, उसके बाद रेटेड वोल्टेज से ऊपर आप नहीं जा सकते, सो यू कैन नॉट कीप द V by F रेशियो एज कांस्टेंट। सो उसके बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी एंड द वोल्टेज इट विल रिमेन कांस्टेंट। और जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्लक्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, योर टॉर्क विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, और आपकी जो मोटर की कैपेसिटी है इट विल रिड्यूस। So what are the various advantages of V by F control? So first is that जो आपका required torque होता है, required torque, it is obtained at lower current. So you can reach your जो भी आपकी torque requirement है, it can be obtained at a lower current. Your speed control and braking operation. So they are available from zero speed to above base speed. So by this control, you can almost bring your induction motor to standstill. So third, it has good efficiency and good
as compared to the other methods जो अभी तक हमने बाकी methods देखे थे, as compared to them it has good efficiency, but when you compare it with the vector control, the efficiency isn't that high. So it is in relation to the previous methods that we have discussed. It has good speed regulation. You can use this in squirrel cage induction motor. The last one is during transients. Starting, braking, and speed reversal. The operation can be carried out at maximum torque with reduced current, giving good dynamic response. So these are the various advantages of your V by F control. So we have discussed so far what is your scalar control, the construction of an induction motor, the working of an induction motor, the torque equation of an induction motor, the various scalar control methods of induction motor. So these are the various scalar control methods. And the disadvantages, the advantages of your V by F control. So we have some more methods like the stator current control. So what we do here is we reduce the stator current. जब आपकी stator current reduce होती है, so your magnetic field it will reduce. So your induced voltages will also reduce. So when the induced voltage आपकी जैसे ही reduce हो जाएगी, so by that you can get your speed control. We also have the stator voltage, current and frequency control. So यहाँ पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज चेंज करते हैं, करंट चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, such that your V by F ratio it is constant and further change in speed is possible, and further you can get a further speed range by changing current. These are the various scalar control methods. There are some more methods that we will see in the next class, and we'll also see how your V by F control is achieved. So today we will stop here.